Vishwasai. A recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. गिरिधर नागर कुंज विहारी, गिरिधर नागर कुंज विहारी, मधुवर संचारी पर्ति विहारी, मधुवर संचारी पर्ति विहारी, मधुवन संचारी पर्ति विहारी, गिरिधर नागर कुंज विहारी. Namaskar, Sai Ram. Welcome to Shirdi Sai Vishwa Sai, the show in which we try to celebrate the presence of the divine, especially in the form of Shirdi Sai Baba. Sai Baba is connecting with his devotees as he promised in his human form at various places, in various ways. People not only find solutions by connecting with the flow of the grace of Sai Baba, there is also additional availability of the inexhaustible love within, and that prompts them to commit themselves to serve humanity, because to serve is also to be one with the essence of the Creator, and we invoke that all-pervading presence by Vedic chanting in today's Shirdi Sai Vishwa Sai. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं
ईश्वरीगुं सर्वभूतानान्तामिहोपह्वये श्रियम् गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनागो रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यशुचिः प्रयतो भूत्वा दुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेतु आनन्दः. Indian culture teaches us to be grateful. We are encouraged and taught to be grateful not only to our mother and father, to the elders, but also to the environment. And earth is addressed as mother also. Prithvi Mata, Dharati Mata. Now, the earth, the mother earth, is in great danger. You can see so many natural calamities happening all over the world for the last 5 years. Tsunamis, earthquakes, eruption of the volcanoes, severe hurricanes, etc., etc. So, we have to think about the mother earth first. We are thinking about the religion, we are thinking about the nation, we are thinking about this and that, and we are ready to fight for our religion and for our nation and for our frontier also. But we are neglecting and ignoring the base for all the for the whole human race, for all the people who are living in this world. Sometimes you discover that hidden in a saint's loving heart is also a wonderful singer. And Vishwayogi Vishwamji Maharaj shared this song dedicated to Mother Earth. Mata manasa smarami, Mata manasa smarami, Bhumata Shirasa namami, Mata manasa smarami, Bhumata Shirasa namami, Panchabhuta Samaikya Swarupini, Panchabhuta Samaikya Swarupini, Panchaprana Pramoda Pradayini, Mata Manasa Smarami, Bhumata Sirasa Namami.
सकल चराचर जीवदायिनी सकल चराचर जीवदायिनी सर्वमानव प्राणप्रदायिनी सर्वमानव सकल चराचर जीवदायिनी सर्वमानव प्राणप्रदायिनी विश्वविराजित तेजोरूपिणी विश्वविराजित तेजोरूपिणी विश्वप्रिये विश्वप्रेमानुरागिनी माता मनसा स्मरामि भूमाता शिरसा नमामि ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ దేశమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ దేశమైనా మనుషులమంతా నీ పిల్లలం మనుషులమంతా నీ పిల్లలం మనుషులమంతా ఒకే కుటుంబం మనుషులమంతా నీ కుటుంబం మాతా మనసా స్మరామి భూమాతా శిరసా నమామి. We have to bow at the lotus feet of the Mother Earth. So we have to put, Mother Earth is asking us to give two flowers, to put two flowers at her lotus feet. What are they? Heart and mind. We have to give fragrance also. What is that fragrance? Heart, love, mind, peace. We have to fill the heart with divine love, and we have to fill the mind with peace, and we have to put those two flowers at the lotus feet of Mother Earth and at the lotus feet of the Universal Father, Vishwa Guru, Vishwa Pita. Who is that person? Come on, tell. Sainath. Who is that person? Sainath. It is always inspiring to hear how grace of Baba manifests and changes people's lives. According to Dr. Nuri Dattatreya, when science and medicine stops, spirituality starts. I think I'm very pleased that a lot of devotees from New Jersey now can go there, and that has become, with his blessing, because both Murtis are identical like Shirdi Murtis, become a pilgrimage for all Sai devotees. And it makes me so happy to see on a Thursday, if you go there, people are walking from all corners of Oak Tree Road, Islin and Woodbridge and Edison, just like you see in temples in India. No car, no vehicle, all coming through all channels, coming to the temple. And I'm very lucky that I have the support of a lot of volunteers and other supporters for both mandirs. And someone asked me, some of the news media people, how many members are there in your board?
You run two big temples here in New York and New Jersey. I said, there are no board members. Who is the head of your committee? I said, Baba is the head of committee. So everything is done through volunteers here. So many devoted volunteers, both here and there. So if you keep him as your chairman of the board, everything goes smoothly. If you keep him, that is Shirdi Sai Baba, as chairman of the board, then everything goes smoothly. And that's what we all aspire to be able to do, and to follow footsteps of Dr. Nuri Dattatreya in how service and devotion sort of become one at one point of time. And Dr. Nuri, the kind of people that come, it's also related to a wish of Shirdi Baba, wherever you are. Talking especially about this particular temple, and I have been coming here for such a long time. Of course, there are many devotees, but I'm just referring to the priests, the presence of priests, and how the puja is performed and how devotees feel welcomed. I think that has a lot to do with the approach, attitude, devotion of the priest also. So Raghuji served Baba here for a long time, which was a great thing for all devotees. And now we have Sanskrit brothers Mahadevji and Srinathji here. Share with us how Baba probably guided you in bringing who is going to serve him here. Again, whomever he brings, he has to like them. So all the priests that come from India to here, Raghuji is now in New Jersey, Ravindra Sharma there, Pratap, and here Srinathji and Mahadevji, they are selected by him. I think this is a greatest blessing for them to serve him. I have no doubt about it, because if they don't have the devotion and the sanctity in their mantras, he won't keep them here. And I consider that they are incredibly blessed, because they are doing Abhishekam to Baba, they are doing Archanas, they are reading, Srinathji reads Ramayana, Mahabharata here, that's what he likes them. And you think that he's just wasting his time. No, he puts this idea into his mind, read Ramayana here, I would like to read Rama Vijayam here. So this is, unless you know his modus operandi, you think that this is a simple thing. There is a profound meaning in everything that happens in a mandir like this. So I'm lucky that we have very qualified, highly learned Pandits both here and in Islin Temple. And first thing I would like to do is to make them happy. So we have a house we bought both here and in Islin for them to stay. They don't have to take a car or any other transportation, just open the back door, they are here. So that is the kind of convenience, because they should be available for all the devotees when they come to pray to Baba. Again, it happens so many times in both mandirs. Just before closing, they get an idea into their mind, we had to do something, we forgot to do something in the mandir. So they open it, they do whatever they're supposed to do, and ready to go. Now 3 or 4 devotees come into the mandir. At that minute, then you realize he delayed them going out of the mandir, not for them, because someone else is coming here. So those kind of connections, I can narrate to you hundreds and thousands, both here and in Islam. So watching him do his subtle miracles is most joyful experience of any devotee. Shraddha or Saburi, faith and patience, these are the 2 key words that are given by Shirdi Baba, but there are many other aspects which are subtle that reaches us through Sai Charitra. Om Ganana Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। ओम श्री साई राम गुरुदेव दत्त। साई चरित्र अध्याय 18-19। श्री हेमाड पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी। ब्रह्म ज्ञान हेतु लालायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हेमाड पंत ने पिछले 2 अध्यायों में किया है। अब हेमाड पंत पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें फलीभूत किया और आत्मोन्नति और परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश दिए, इनका इन 2 अध्यायों में वर्णन किया जाएगा। पूर्व विषय। यह विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डावाडोल न कर वो उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित नहीं करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। वास्तव में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के बादलों की तरह हैं जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, यानी वो अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। पहले तो उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। ये नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरण के लिए बुद्ध कौशिक ऋषि ने स्वप्न में प्राप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनता के हित के लिए प्रकट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार के लिए कड़वी औषधि का बलपूर्वक भी प्रयोग करती है, उसी तरह साईं बाबा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही उपदेश दिए। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूरी तरह स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूरी तरह पालन किया वो अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ हैं। विषय वासनाओं में आसक्ति नष्ट कर वो भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। ये सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो और सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी जो भक्त काम कल्प तरु हैं हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं। वो हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। ये सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। क्रफोर्ड के शासनकाल में कई साल पहले उन्हें कुछ ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में बहुत हानि हुई और स्थितियां अनुकूल न होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वो बहुत दुखी और निराश हो गए और अशांत होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। अक्सर मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल और बुरे दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की तरफ ऐसे समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। अगर उनके पाप कर्म शेष न रहे हों तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याण के लिए ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आ रहे हैं। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वो शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल और विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत और स्थिर हो गया।
उन्होंने सोचा कि पिछले जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब 1 सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं और श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है जो इस प्रकार अचेत अवस्था में पड़े हुओं को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान करने का अवसर प्रदान करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। That is all the time we have in today's Shirdi Sai Vishwa Sai. Do join us next week in this program on Thursday at 6 p.m. and we also have a repeat of this show at 11 a.m. on Friday. Om Om Sai Ram. Om Shirdi Sai Ram. Om Om Sai Ram. Om Shirdi Sai Ram. Om Om Sai Ram. Om Shirdi Sai Ram. Dwarakamayi Sai Ram. Dwarakamayi Sai Ram. Shanti Pradayi Sai Ram. Dwarakamayi Sai Ram. Shanti Pradayi Sai Ram. Prema Pradayi Sai Ram. Prema Pradayi Sai Ram. Shanti Pradayi Sai Ram. Shanti Pradayi Sai Ram. It is your wholehearted love and devotion for Baba that makes these kind of programs or various satsangs or activities at temples like Sai Mandir Balwin and other temples happen. We all celebrate that presence at each and every step of our life. That is the aim, and probably that also makes us one with a sense of fulfillment. With lots of good wishes, this is Ashok Vyas. Sai Ram. Jai